फिजिक्स, लेट्स गो। क्या है? A rigid body rotates about an axis through the origin with angular velocity something. Okay, if omega points in the direction something. Okay, the equation of locus of the points having tangential speed 20 meter per second is okay. So points जिनकी tangential speed ये है. Oh, that just means like omega vector times okay cross r vector, right? Mm-hmm. So what actually means is like r vector cross omega vector, so magnitude that is basically what? That's 20, right? Yeah. और अपने को ओमेगा पता है कहाँ पर, जस्ट 111 उसकी ओके मैग्नीट्यूड ये मतलब कि 10 टाइम्स ऑफ 111 आएगा, राइट? या ओके, सो क्या हो जाएगा ये ये चीज लाइक ये तो अपन कर सकते हैं ना, जस्ट इसका स्क्वायर का डालो, देन व्हाट वी गेट, जस्ट गेट इसमें तो आएगा x1 एंड देन y1 का स्क्वायर प्लस x1 z1 का स्क्वायर प्लस y1 z1 का स्क्वायर एंड दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे लाइक 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। या ये चीज होती क्या है, जस्ट x माइनस वाई आई गेस, x माइनस वाई का स्क्वायर इज लाइक x माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे सिमिलरली x माइनस, हाँ तो वो सम ही कर दो ना इसका, सो जस्ट गेट लाइक 2x स्क्वायर बिकॉज 2 बार x स्क्वायर आएगा, सिमिलरली 2z स्क्वायर 2y स्क्वायर वॉटेवर, और हर इसमें क्या आएगा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz नेक्स्ट इक्वल टू 4, सो लाइक x प्लस, हाँ ठीक है, तो अपने को करना क्या है, राइट? सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस, हाँ वो सब, that minus 2 equal to 0. That makes sense. C is the answer. Next question. 57. बहुत ज़्यादा zoom कर दिया. Okay. For real number x, let this denote the okay. Yeah. Just and this denote the small integer less than or equal to x. Okay, greater than or equal to x. Oh, so it's the ceil function, right? Yeah. Okay. Also for x in 0 to 4, let f of x be equal to minimum of x minus this thing. Okay. Understood. मतलब ये चीज क्या है? It's like this thing. Minimum of fractional part of x, and then this is just yeah, it's like 1 minus fractional part of x, because this thing is basically yeah 1 plus integer part of x, right? So just this thing. Yeah. Okay. And यानी कि fractional part of 1 minus x or whatever negative x अगर तुम्हें करना होगा तो anyway that's the thing. Okay. Then this integration is equal to what? So negative 4 to 4. अच्छा एक काम करो ना, n to n प्लस 1 की बात करते हैं, इस इंटरवल में क्या हो रहा होगा? सो ये n है, ये n प्लस 1 है, यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन 2 रहेगा, राइट? n प्लस 1 अपॉन 2। सो यहाँ से अपन स्टार्ट करने को मिनिमम देखना है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मतलब कि ऐसा जाता होगा, एंड देन 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ऐसे जा रहा होगा, अपने को मिनिमम देखना है मतलब कि ये इतना, राइट? इसका मतलब कि ये जो एरिया है ये अपना इंटीग्रल हो जाएगा फॉर दिस थिंग, और ये हाइट कितनी है, हाफ, तो जस्ट हाँ ये तो राइट, ये आई थिंक मैंने पहले देखा हुआ है, राइट? ये डिस्कॉर्ड में मुझे पूछा था क्वेश्चन, वॉट एवर। सो ये जस्ट हाफ ऑफ ये वन, लाइक हाफ ऑफ दैट इज 1/4, 1/4 कितने बार? 8 टाइम्स आई गेस, सो 8 टाइम्स 1/4 इज 2, सो A इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58. 58 is the maximum value of the function, this function, for every x belonging to real is okay 7 cosine x plus 24 sin x times 7 sin x minus 24 cosine x. Very interesting. I've seen it somewhere, I don't know. I think I have, wait a second, maximum value here. Okay, I think it's like this thing, 7 comma 24, this vector dotted with, so cosine x comma sin x, right? Yeah, cosine x comma sin x, and then this times of same vector 7 comma 24, या फिर मैं इसको 7 कॉमा, या फिर मैं इसको -24,7 भी लिख सकता हूँ, या okay, -24,7 भी लिख सकते इसको, so it's this thing -24,7 and then this dotted with cosine x comma sin x. so basically ऐसा हो गया कि तुम्हारे पास में लाइक ये दो डायरेक्शंस है, एक डायरेक्शन है ये वाली और एक डायरेक्शन है ये वाली, तुम इन का डॉट ले रहे हो, ओके, और तुम डॉट ले रहे हो, एक काम करो,
right? And then just you want a unit circle or something like that. Huh. So dot cosine x and sine. So that's weird. Wait a second. नहीं इसको अपन अलग तरह से देखेंगे. We'll see this as 7,24 dotted with minus, but okay no, sin x comma minus cosine x. तुम इनका डॉट प्रोडक्ट देखो, ये जीरो हो जाता है, राइट? सो दिस इज लाइक ये डायरेक्शन है c कॉमा s वाली, एंड दिस डायरेक्शन इज s कॉमा नेगेटिव c. ओके, जो भी होगा. और 7,24 कोई से रैंडम वेक्टर है जिसमें घूम रहा है. एनीवे अपने को पता नहीं ये एंगल्स क्या होने वाले हैं. ऑल वी नो इज कि ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, और अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन ये वाला वेक्टर रैंडम है, जिसका मैग्नीट्यूड पता है, जिस 25. आई गेस इट वाज 25, राइट? बिकॉज या इट वाज. सो अपने को ढूंढना है कि मैक्स, और अपने को डॉट अपन इसका ये तो यूनिट वेक्टर है, सो जस्ट ये वाला जो कंपोनेंट है अपने को ये मिल जाएगा, राइट? बेसिकली इट्स लाइक 25, और लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो 25 cosine थीटा टाइम्स sin थीटा. इज दैट राइट? अपने को इसको मैक्सिमाइज करना है. हां, 25/2 टाइम्स sin ऑफ 2 थीटा, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 25/2, राइट? राइट. और ये दो बार आ रहा है, सॉरी. Oh, so you want to take like, oh, it's a 25 cosine times 25 sine. 25 square times sine cosine. Okay, so 625/2 times 1. So C is the answer. Next question. Very weird. 59. I think इसका normal तरीका भी था, इसको expand करो whatever. 59 is if f is equal to this thing, this denotes the forward fractional part of the x. Which of the following is correct? So it's x square fractional part of 1 upon x square if x is not equal to 0, and if x is equal to 0, just 0. Okay. 1 upon fractional part of x squared. Okay. F is discontinuous and x equal to 0. I mean, if fractional part, so it is in fact like, yeah, it doesn't actually matter because, it's kind of a weird thing. Like, as this is going to 0, as x goes to 0, ये जो चीज है, this just becomes 0. I get that. But is that enough to say it's continuous? Maybe. But the limit is 0, so yeah, we'll just say it's actually continuous because definition wise तो काम कर रहा है. So हाँ, it is continuous at that point. और differentiable है कि नहीं है? Oof, that is weird. 1 upon x square is approaching infinity or something, so it's just not going good, huh? Think about it. कोई तो यार तरीका होना चाहिए जिससे अपन आराम से कर पाए. Fraction part of 1 upon x square. How, like differentiation इस चीज का, I don't think it's doable. It's like ऐसा हो जाएगा ना, 2x fractional part of 1 upon x square plus x square derivative of fractional part of 1 upon x square. But then how is that going to help? Because कुछ points पे वो एकदम infinity वगैरह है, और कुछ points वो, हाँ, ये तो अजीब हो जाएगा. The derivative of fractional part of 1 upon x square, you see. I mean, it's okay because 1 upon x square is a positive quantity. So 1 upon x square minus some integer, which is like the integer part of 1 upon x square, right? That is the fractional part. So कोई इंटरवल में सपोज इंटीजर पार्ट ऑफ 1 upon x square कांस्टेंट है, मतलब रहेगा ही. ऐसे इंटरवल अगर अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन आई नो इट्स लाइक नॉन डिफरेंशिएबल एट 1000 ऑफ पॉइंट्स, राइट? बट देन एज एन इंटरवल अपन देखते हैं तो फिर वो है वहां पे डिफरेंशिएबल. दिस इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी सेंस. आई डोंट थिंक इट्स डिसकंटिन्यूअस, बट शायद से डिफरेंशिएबल नहीं है. Yeah, this should make sense, right? F dash of 0 can't be determined. Okay, this is in fact the fractional parts, like, okay. मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 upon x square minus the integer part of 1 upon x. So इसका derivative is like the same thing as the derivative of 1 upon x square. So just negative, हाँ, but this is not making any sense. ये वैसा हो जाएगा ना, 2x fractional part of 1 upon x square, and then you just have, अगर अपन वो सारे discontinuous differentiation में भूल भी जाए तब भी, just using the normal definition as well, you get something complicated. So minus x, and then you got like negative 2 upon x cube. So you should get negative 2 upon x. So even as, yeah, like ऐसे भी तो ये normally भी differentiation का discontinuous है. So yes, it's not differentiable.
So B looks correct. Exists but can't. No, it doesn't exist. So I think B is correct. Next question. Yeah, अजीब था. 16. If this and this B2 sequence is given by an equal to this thing and Bn equal to this thing, then the value of A1, A2, A3 till An. Okay, wait, what? इनका multiplication. समझा? So like x power 2 power negative n plus y power 2 power negative n. और फिर तुम इनका मल्टीप्लाई. वेट व्हाट? बट बी एन का आपने करना क्या आखिर? इसमें बी एन का कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? अच्छा है, इसमें ऐसा इंपॉर्टेंस है. फाइन. जैसे एक्स पावर 2 पावर नेगेटिव. ओके, इसमें एन है ना? ओ ओके, वेल दैट वाज वियर्ड, वेरी वियर्ड. तो अब क्या? सो एक्स पावर नेगेटिव. ओके ठीक है, समझा मैं. आई एम गेटिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, बट लाइक ठीक है. तो स्टार्ट में क्या आएगा? एक्स पावर 2 पावर नेगेटिव एन, एक्स पावर 2 पावर नेगेटिव एन, और फिर बाद में एन माइनस वन में क्या आएगा? नेगेटिव एन प्लस वन. लाइक वो प्लस वन कहने की टाइप स्क्वायर स्क्वायर, यू गेट द सेम. सो जस्ट इसको मैं बी एन से मल्टीप्लाई कर डालूं, देन इट जस्ट बिकम्स व्हाट? इट विल बिकम लाइक वन में क्या रहेगा? इट्स लाइक एक्स पावर 2 पावर नेगेटिव वन एंड देन वाई पावर 2 पावर नेगेटिव वन, राइट? तो उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करके जस्ट एक्स एंड minus y. So it's just x minus y upon bn, right? This thing. So B is the answer. Next question. 61. The variable x satisfying the equation belongs to the interval. So this equation, right? Mod sin x plus mod sin x cosine x. Okay, plus ye cheese is equal to. Hey, look at that. This thing, I've seen that somewhere. Is this thing mod of like, okay, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, but whatever. Just 1 upon 2 sine of 2x plus this is like mod of what? Tan x plus cosine x, sorry, cot x, right? Well, yeah, but then what is it? S upon c plus c upon s, so वो just 1 upon sc हो गया, right? It's like, yeah, मतलब 2 upon mod of sine 2x, right? And that is equal to sort of 3. Very interesting. इसको अभी के लिए u बोल दो. इसलिए what, like u square plus 4 upon 2u is equal to sort of 3, I guess. Okay, not going good. कोई और तरीके से कर सकते इसको. I mean, you can square this, right? You can, of course, square this. That will give you a nice thing. I mean, this is identically the same as इसका square कर दो, and then, but yeah, it's gonna work out. Because think about it, this is actually like what? Mod of sine 2x upon 2 plus 2 upon sine 2x, right? That is equal to sort of. So ये चीज तो identically उसके equal. Oh yeah, cool. So square कर डालो दोनों sides. तो मेरा same equation बनेगा. मतलब क्या? You know what? Let's just say s equal to u for now. So it's like u का square plus 1 upon u का square plus 2 is equal to 3. मतलब अभी minus 1 आ जाएगा, just equal to 1 basically. This doesn't happen because it's actually like bigger than or equal to. Oh yeah, okay, this is bad. It's really bad. This cannot happen. This just cannot. Yeah, this thing is just okay. Not this thing. This thing bigger than or equal to 2 times 1. So ये तो छोटा है. ये हो ही नहीं सकता. It's impossible. It's non-existent. So D is the answer. Next. 62. 3 normal die, 1 red. Okay. 3 dice है, 1 red है, 1 blue है, 1 green. अच्छा, मैंने पूरा लिखा क्यों? Are rolled all simultaneously. Let E be the probability that the sum of the numbers on the red and blue die is equal to the number on the green die. Okay, so red plus blue equal to green चाहिए अपने को. If P is the written what? P is written in lowest term as A upon B, then value of A plus B equals probability की red और blue के जो ऊपर जो आया that is equal to whatever is on green, right? Okay, this is not going good. Okay, so I just start. Green 1 तो नहीं सकता because at minimum like 2 होना चाहिए. So you can have like green equal to 2. So जब green 2 है, हम ग्रीन की वैल्यूज देखते हैं, देन फिर रेड ब्लू की लाइक केस कितने आने वाले. सो जब ग्रीन 2 है देन रेड ब्लू का हमारा केस कितना है? इजंट दिस लाइक 1? हाँ ठीक है, जस्ट
या there's only one case. फिर जब green 3 होगा तो फिर इसमें 1 plus 2 and like 2 plus 1, so हाँ 2 cases. तुम पैटर्न देख सकते हो. फिर 4 तब 3 and then 5 तब 4 and जब 6 आएगा then it's just yeah मतलब 1 or 5 and then go on like 5 of these guys, right? Yes. So इतने पेयर्स आने वाले. ओके कूल. सो जस्ट ऐड कर तो जस्ट 15 तरह से तुम्हें ये मिलता है. देन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज की हो सकता है दैट इज 6 पावर 3 बिकॉज हर एक में 6 नहीं है. सो 6 पावर 3 that should make sense like just 3 times of 5 upon 6 square times 6. So ये तो गया just this thing. Okay, so reduced form में यही होगा ना. So just 36 plus times 2 is 72, 72 plus 5 77, which is the next question. 63. 63 is the rectangular hyperbola. This thing meets a circle at the point this and that and touches it at a point R. Okay, rectangular hyperbola meets circle. Acha, circle at points. Okay, let's reduce करो. Let's just say u is equal to x minus 1, so just u v is equal to 4. And फिर ये क्या हो जाएगा? p will be, so इसकी u v पेयर क्या होगी? Just x minus 1 y minus 2 मतलब क्या 1 comma 4 and q will be like 4 comma 1. Okay, and it touches it at point R. So first of all ये symmetric about y equal to x. मतलब ये ऐसा hyperbola है. यहाँ पे p का इधर भी होगा. अच्छा 1 comma 4 हाँ यही पे. And then this is like 4 comma 1. This is p and q. करना क्या अपने को? So rectangular hyperbola meets the circle at. अच्छा इसके थ्रू एक सर्कल पास करना है and touches it at point R. Oh, there's only one way कि ऐसा हो सकता है, which is like this. Okay, तो ये जो point है that's point R. Just figure out what R is. It's just negative 2 comma 2. Okay, negative comma negative, whatever. Okay, so what is the center of the circle? Oh, this is not that hard, I guess. So you get thing like यहाँ पे perpendicular and then yeah whatever, just somewhere over there, right? Yeah, just figure out the center of the circle. Wait, I think I have an idea. मतलब ये perpendicular, you just get like y equal to x. Okay, but where exactly over here? अच्छा अपने को ये इसमें परपेंडिकुलर के पैसे निकालने पड़ेंगे क्या? आर यू सीरियस? सो सपोज तुम्हारा जो पॉइंट है जस्ट a comma a, right? That's our center. Then what do you want? You want like, this is just going bad, isn't it? Oof. Yeah, this won't help. Maybe it will. Who knows? So look enough. So what we have to do is like, इसका distance from these two are the same. That's the condition. Okay, similarly, distance ये तो अपने आप equal हो ही जाएगा. So we have to worry about this. Just what? A minus 1 because क्या था ये 1 का 4 ना, so just a minus 1 का square plus a minus 4 का square, that is equal to what? A plus 2 का square and then plus a plus 2 का square, right? I guess yeah, which means 2a square minus a properly लिखना पड़ेगा. A square minus 2a plus 1, a square minus 8a plus 16 is equal to a square plus, okay इसको 2 times करना ही पड़ेगा. So 2 times of a square plus 4a plus 4 is like 2a square plus 8a plus 8. Yeah, so 2a square तो मर गया. It's just like वहाँ पे जाएगा 16 and then 18a और यहाँ पे आएगा 17 is equal to 18a plus 8. इसको उधर भेजो. just it's not making sense. Wait, इसमें गड़बड़ नहीं हो रही अपनी? It was 1,4 for sure, so this should have been thing. Yeah. Huh, it is 18. Yes, this is actually 70 minus 8. Wow, just 9, I guess. So 9 equal to 18, like a equal to 1 upon 2. So the pair we got is like u equal to 1 upon 2. मतलब कि क्या? X minus 1 is equal to this thing, and 1 upon 2 is equal to y minus 1 is equal to v, right? So क्या? Y minus 2, sorry. It will be, yeah, it's just that, right? Yes, that should be the thing. Which means 3 upon 2 and 5 upon 2 is the center. So A is the answer. Next question. 64.
64 is total number of odd four-digit odd numbers that can be formed using 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, and then 5 and 7, and having distinct digits are four-digit odd numbers. So 4 digits चाहिए अपने को odd numbers. 0 तुम use कर रहे हो, start with 0 input करते हैं unfortunately. Okay, distinct digits. अच्छा, so you only have one. तुम repetitions नहीं कर सकते. Okay. And it should be odd, so last का number odd चाहिए अपने को. last के number में क्या क्या अपन रख सकते हैं, we can put, so it's about like 4 places. last के number में what are the things you cannot put, अपन पहले देखते हैं. You cannot put 0, 2 and well okay 1, 3, 5 7 कोई ना कोई चल जाएगा. So you can't put 0 or 2 in here, ये नहीं चलेगा. इसमें तुम 0 नहीं put कर सकते. अदरवाइज हाँ, इसमें तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट. सो जीरो के लिए कौन से पोजीशंस रहेंगे, ये दो पोजीशंस. सो टू, फिर बाद में तुम्हें टू के लिए चूज करना है पोजीशंस. वेट वेट अ सेकंड. व्हाट इफ, ओके तुम जीरो पे पुट कर सकते हो, राइट. ओके, आई मीन वी आर श्योर कि यहाँ पे जीरो नहीं होगा तब तक. सो जस्ट हैव टू पुट टू ओवर देयर. जैसे कहते हो कि एक में टू है, ओके, तो एक पोजीशन गई हुई है, राइट. So then कितनी पोजीशन, मतलब हाँ ये तीन पोजीशन थी ना, फिर टू के लिए तो एक तो चली गई, जस्ट टू टू मोर. दैट शुड मेक सेंस आई गेस. फिर उसके बाद में जो बचे हुए हैं कितने नंबर है, तो 0 2 तो गया, जस्ट 1 3 5 से, मतलब कि अभी 4 नंबर्स बचे हुए हैं, उनको कहीं भी डाल दो, राइट. और उनमें सिर्फ दो चाहिए इनफैक्ट. ओह ऑलराइट, जस्ट टू मोर ऑफ लाइक वो जो दो पोजीशंस रहेगी जो बची हुई रहेगी, उनमें क्या क्या तुम पुट कर सकते हो. पहले पोजीशन में तुम्हारे पास में 4 चॉइसेस है, और दूसरे पोजीशन में तुम्हारे पास में 3 चॉइसेस है, राइट. या बिकॉज एक यूज हो गया. This should make sense. So this is the thing, which is 4 times 4 times 16. Yeah, like 16 times 3. That should be the what? हाँ, but इसमें है नहीं. Why is that not here? ये क्या कर रहा है ये, मतलब. Oh, okay, okay, okay. Wait, no, that's not the thing. जो positions बची रहेगी इन सारे वो distinct. I get that. You don't put two over there, but you definitely put it somewhere over there, right? So just two chances left for that. अच्छा, ये तब होगा जब अपन 0 और 2 दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं. व्हाट इफ यू डोंट, ओह या व्हाट इफ यू डोंट. सो अगला तुमने 0 को इंक्लूड ही नहीं किया, तुम्हारा जो 2 है तो तुम कहाँ पे रख सकते हो, थ्री चॉइसेस, तुम्हारा 0 है नहीं. अब 4 चीज बचे हुए हैं बेसिकली इसमें. सो लाइक वन सेकंड, जस्ट 4 times 3. वेट ओके, नो 4 times 3 times 2 बिकॉज तुम्हारे पास क्या 3 प्लेसेस बचे हुए. यस या ओके. फिर नेक्स्ट तुमने 2 को इंक्लूड नहीं किया, तुमने 0 को किया. 0 को किया तुमने, जब 2 चॉइसेस है यहाँ पे 0 को रखने के लिए, दैट टाइम्स जो बचे हुए हैं उनको फिल करना है. फिर 4 times 3 times 2. फिर लास्ट में तुमने 0 और 2 दोनों को इंक्लूड नहीं किया, देन जस्ट 4 से उनको फिल करना है. जस्ट 4 फैक्टोरियल, जस्ट 4 3 2 1, which is also this thing, so whatever. So ऐसा बोल सकते हैं इसको, which is like 6 times ये चीज. so 6 times 4 times 3 times 2, और ये हो जाएगा 2 times 4 times 3 times 2, मतलब कि 8 times 4 times 3 times 2, which is 8 times 8 64 times 3, मतलब कि कितना 18 and 12, which is 192. So D is the answer. Next question. 65. 65 is solution of the differential equation, okay, is given by, so y plus 2x square y square dx plus, okay, जो भी है y plus 2x square y square. I think तुम्हें x y हर जगह पे दिख रहा है. Is it that right? Yeah, it is. So we'll try to think what. Okay, एक काम करते तो x y कॉमन ले लिया यहाँ से, and this is like y dx plus x dy rs, just dxy basically. फिर तुमने x square y square कॉमन ले लिया, just plus x square y square. And what do you have? You have 2y dx and then minus x dy. Okay, that's equal to 0, right? So x, I can't put x square y square से divide कर डालो, because I guess that might, or not with x square y square, maybe just with x y, because so we have to make some use of this. Okay, 2 dx.
Where have I seen this before? What about like, huh? 2 is bad. So it's like x cube. That would have made sense or something. यहाँ पे तुमने y डायरेक्ट लिया होगा, I suppose. Okay. Oh, I know. Just multiply by y, right? Because this will just be 2y squared. Okay, this is not making sense. Xy is a multiplier, no? Because so 2y squared. Wait, it's not making sense for some reason. It's a negative here. You don't do that, right? Okay, so we'll have to think about something else. What if it's like 2 upon y? That doesn't make sense. But you can always go with dividing by x squared, right? Actually, मैं x square को y को मैं अंदर भी ला सकता हूँ. That is one thing, but so पहले तो इसको सही से लिखते हैं. It's just this thing dxy upon xy um, is equal to x dy minus 2y dx. Okay. What I'm thinking is कि इससे कुछ भी बाहर निकालो जिससे because we have xy everywhere. Let's say maybe तुम x times y. Okay, अभी तो नहीं. सोचो क्या सोच सकते हो. Negative 2 upon x. That makes sense, right? Just wait. I think it's like 1 upon x. Yeah, you need like this thing. So it's x cube बाहर निकाल लिया. It's just 1 upon x squared dy minus 2 upon x cube y dx. This is like what? X cube and then d y upon x squared, right? But then, oh yeah, just call u as xy and v as y upon x squared. So what will x cube be? X cube is just u upon v because ऊपर is just du upon u is equal to what is this thing? Just u upon v, right? Yeah, u upon v times dv. Awesome. So you know du upon u squared is equal to dv upon v. मतलब negative yeah, negative 1 upon u is equal to natural log of v plus some kind of constant, right? Which is like अच्छा u क्या था इसमें x पास में negative 1 upon xy is equal to natural log of ये चीज अपनी y upon x square plus some constant, right? That's the equation. Okay, से mod क्यों ला रहे हैं लोग? Oh, because यहाँ पे mod आएगा. Okay, understood. Which is what? Natural log of mod of y minus 2 natural log of mod of x plus c, right? Okay. देखते कौन सा सही है इसमें. So अपने को 2 natural log of mod of x चाहिए तो उसको उधर भेज दिया. Just 2 natural log of mod of x फिर minus natural log of mod of y minus 1 upon xy is equal to some kind of constant, which is I think a. Looks cool. कहीं और है ऐसा कुछ? ये नहीं है. नहीं. So a is the answer. Next question. 66. If the difference of the roots of this equation is equal to the difference of the roots of the equation this, okay, then so plus beta is missing. So the square भी same होगा ना, right? Okay, yeah. So like that's alpha plus beta का square minus 4 alpha beta. So you know like a square minus 4b. That's equal to similarly यहाँ पे just b square minus 4a आ जाएगा in that case. Yeah, that's what it is. So what does this mean? Like just a square minus b square is equal to 4 times of b minus a. Or you could just say this thing plus 4 times of a minus b equal to 0. So either a plus b plus 4 equal to 0 or so plus equal to negative 4 or a is equal to b. I don't think a equal to b has me. So just b is the answer. Next question. 67. Come on, let's speed up. Okay, 67 क्या है? In the range of okay, in this range, so it's 0 to 5 pi. This equation has so 3 plus c ka square is equal to 4. Okay, fine. So this is like 3 plus 6c plus c squared is equal to 4 minus क्या 2 sine. Okay, fine. Minus 2 times 1 minus cosine square की power 4, right? But yeah, it's just ये तो मर गया. Just 6c plus c squared is equal to 1
minus 2 ये सब. Okay, so 1 minus 2 times of 1 minus 2, which is 4 powers, is not going to go easily. Wait, but 4th power, how can I do that? This would not make any sense because, huh, some other way. Even the polynomial equation was solved कर सकते शायद से, but I want some other way because this is just getting bad for no reason at all. Come on, think. Must be something I can do. Useful. Oh, it should be 9 over here. Sorry. Okay, it's 9 over here. It's like this thing c square plus 6 c plus 5. Oh, I know what this is going to be. Equal to negative 2 times. So like 1 minus c ki power 4 times 1 plus c. I guess that is the thing. So this can be done as what? C plus 1 times c plus 4. And then plus 2 यहाँ पे डाल दो, just c plus 1 की power 4. Then c minus 1 की power 4 is equal to 0. So 8 c plus 1 gaya. Either c could be negative 1, that makes sense, or you could have this thing c plus 4 plus 2 c plus 1 cubed c minus 1 power 4 is equal to 0. This is kind of weird even now. Huh. Interesting. It's like saying c plus 4 is equal to 2. So like ये क्या हो जाएगा? Cube of ये वो नेगेटिव. ओके, काम करो प्लस 2 रखो यहाँ पे प्लस लाइक प्लस 2, फिर इट्स जस्ट 1 माइनस c की पावर 4, यानी कि जस्ट s पावर s स्क्वायर की पावर थी आई गेस. या सो जस्ट sin पावर 6 एंड देन जो बचा हुआ जस्ट 1 माइनस c की पावर कितनी, क्या था ये 1. ओके c माइनस 1. ओ अपने को क्यूब बाहर निकाला था ना. ओ ओ या ओके, बट देन फिर अपने पूरा का पूरा इन्वर्ट करा था. नो बिग, जस्ट 1 माइनस c ओवर देयर equal to 0. Cool. So this will be the thing. Does this have any solutions? Okay, it's getting complicated. It's like c plus 4 upon c minus 1 or something like that. Oof. That was just one. Okay, ये इतना बुरा भी नहीं है. Oh, I know. Look, c plus 4 is positive. 1 minus c is always positive. This is always positive. Or 0 or whatever. तो इसका में एक ही मतलब, इनफैक्ट ये भी नहीं, एक काम करो c plus 1 plus 3 कर दो यहाँ पे, which means this can never be 0. It's like always bigger than or equal to 3. So, that's it. मतलब c equal to negative 1 is the only solution. Okay, so अपने को चाहिए when is c equal to negative 1, just at pi, at 3 pi, and at 5 pi. 5 pi included here, that's the thing, which means 3 solutions. So, exactly 3 solutions, which is B. Next question. 68. The parabola y squared equal to 4x meets a variable line p and q such that, अच्छा तो एक parabola है, meets a variable line p and q में such that p q is right angle at the vertex O. Okay, it's like t1 t2 equal to 4 basically, or negative 4 or whatever. Minimum area of the triangle OPQ. I think मैंने देखा हुआ है 1000 बार शायद. हाँ. Anyways, just want the area of this triangle, right? Oh God. Seriously though, why do you want this? ये लेंथ निकालो, ये लेंथ निकालो, मल्टीप्लाई करो, राइट? इट्स लाइक हाफ स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा ये लेंथ क्या रहेगी बाय द वे? इट्स 80 स्क्वायर कॉमा 280, फिर वो नॉट गुड. 80 बाहर निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4, राइट? या सो वो सब बाहर निकालने पे जस्ट बिकम्स दिस थिंग a square t1 t2 just negative 4, but some mod label just 4. It's 2a square, 2a square square root of 1 plus, so sorry, not 1, it's actually 4 plus t1 square times 4 plus t2 square, right? Yeah, so it's like 2a times, ये क्या हो जाएगा, just 16 plus t1 square plus t2 square plus 16, 1 second. Yeah, oh it should be actually 4 times, so that's like 4 times of this. मतलब क्या, it is 4a square root of 32 में से क्या गया, 2 बाहर निकाला, जस्ट 4 बाहर निकाला, बेसिकली 8 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर. ओके, लाइक अगर मैं इसमें नेगेटिव 4 इंसर्ट कर डालूँ, नेगेटिव 8 इंसर्ट कर डालूँ, बिकॉज well, isn't this like
Oh yeah, I know one thing. This is just equal to negative 2 times t1 t2. Isn't that right? So it's just basically t1 minus t2 ka square which is. So what you basically have is like 4a mod of t1 minus t2. That's what this thing will be, or what? I mean, okay. वैसे कोई ना कोई एक तो नेगेटिव होना चाहिए because t1 times t2 is basically like 4. Okay, एक काम करो. Let's just say t2 is actually negative, so फिर this is like plus mod of t2. And then you know like mod of t1 t2 is equal to 4. This thing is bigger than or equal to what? Bigger than or equal to 2 times square root of 4. 2 times 2. Square root of 2 is just, yeah, this happens when t2. So just t1 t2 equal to 2 हो जाएगा mod में, right? So t1 equal to 2 and t2 equal to negative 2 or whatever. So yeah, at that case it's just 4a times 2 times of 2. So 16a probably. Yeah, that's wait. Okay, it's a square shape because इसमें a बाहर है. Yeah. Uh, looks right. Okay, so a square बाहर आएगा, which means 16a square will be the thing. So like 4a का square, so latest rectum का square. I don't know. Still, let's try it out. So दोनों equal to 2 है, then हमारे coordinates क्या आएंगे? So 80 square just 4a comma 280 is also just 4a, and this is a 4a comma negative 4a. And then like 0 0, so this distance kitna hai? Just 4a times, well, let's just like 8a, but then half of that is, yeah, 16a squared. Sure. So latest square is like 4 ka square, 16. So C is the answer. Next question. And this is actually a nice thing to remember. The latest rectangle square is this minimum area thing, whatever. 69. 69 is the greatest coefficient in the expansion of this thing, given that the sum of the all the coefficients is equal to 4096 is equal to. Ooh, 4096. Okay, like, yeah, just sub jab 1 karo. Okay, fine. Like 2 power n is equal to 4096. 4096 is like 4 times of 1 0. Oof. 2 and then 4 has like 2 power 12. By the way, n equal to 12, right? So n equal to 12. मेरे को greatest coefficient चाहिए, just from 12c6 or whatever. Yeah, 12c6. That is in fact the greatest coefficient. Which is, do I have to calculate this thing seriously? Just, yeah, okay, 12 times 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Let's see. 4 times 3. Okay, 6 times 2 cancel. In fact, first of all, रहने दो जो भी है. 4 times 3 12 गया. 5 times 2 10 गया. Is this thing? It's like 11 times 9 times 8 times 7 upon 6, which is 11 times 3 times 4 times 7 upon nothing because वो तो मर गया. Which is this thing. So like 11 times 12 times 7. Cool. Which is 132 times 7, which is 4, 1 carried on 21, which is 2, and then 2 carried on 924, which is a. Next question. 70. 70 is number of points of extremum of fx is equal to this thing. Okay. It's extremum. Whatever. Just wait. In some certain range, you're saying. अच्छा ठीक ना वो तो yeah, like वो तो होना चाहिए because positive. Okay. Then just this thing 1 upon x minus 8b plus 16x is equal to 0. That should happen, right? I guess, yeah. Okay, so yeah, like इसके जितने solutions आएंगे those are the points of extremum. Unless वहाँ पे inflection points आ जाए, then that would not make any sense because second derivative should be positive or negative. Otherwise, okay, if it's 0, that's wrong. Oh god, can't be 0. That doesn't make any sense. Okay, think about it. Think about it. Okay, whatever. So first of all, suppose I say just 1 minus 8bx plus 16 x square is equal to 0. So like 1 upon x for u although is just this thing u square minus 8bu plus 16 equal to 0. Yeah, whatever. So what do you want? Or you could always say like, okay, 4x is equal to u. So this just becomes what? U squared minus 2bu plus 1 equal to 0. So इसके solutions कब आएंगे? Whenever b squared is bigger than or equal to, okay,
जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लाइक डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4 की बात करो, it will just be like b squared and then minus 4 तो गया just 1 over there, so b squared minus 1, right? So अगर ये बड़ा है, so like b is bigger than 1, or if it's like less than -1, in that case यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे. ओके, गॉड दिस इज सो वियर्ड. अच्छा, ये जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा तब. ओह ओके ओके, सो राइट, वी डू नॉट वांट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, बिकॉज तब जहाँ पे इसका मिनिमम आने वाला है वहां पे ये टच करेगा इसको, मतलब कि तब इसका इनफैक्ट सेकंड डेरिवेटिव, राइट, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा इस चीज का, ऑफ कोर्स एफ का. अब that's problematic because yeah, I mean second derivative zero कैसे. okay, wait a second, -1/x² -8, वो तो actually मर गया ना, sorry. And you just have like +16 equal to 0, which means that x² equal to 16, so x is equal to 4, right? तो इसमें पुट करो just 1 minus 32b plus 16 times 16, 256. just b cannot be 257/32, otherwise कुछ भी चल सकता है, right? And that is in fact bigger than 1, but whatever. अच्छा, जब b bigger than 1 है, at that point दो सॉल्यूशंस मिलते हैं यूजुअली, बट देन एट अ सर्टेन वैल्यू इसका सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. तो फिर क्या वो एक्सट्रीमम पॉइंट रहेगा कि नहीं रहेगा? आई डोंट थिंक सो, बट व्हाटएवर, जस्ट नॉर्मल लॉजिक से जाओ. सो 2 इफ b इज बिगर देन 1 एंड ओके, कुछ और दिया नहीं इसमें. 1 if b equal to 1, I guess, yeah. So b is correct. ये मल्टीपल चॉइस तो है नहीं ना? Is this no, it can't be because अपने स्टार्ट किया. b equal to 1, b equal to 1, this is like natural log of x minus x plus 8x squared, so उसका डेरिवेटिव क्या होगा? It's this thing, okay. That will happen at what? U equal to 1, like x equal to 1/4 पे होगा ना वो, right? X equal to 1/4. Something makes sense. Oh, wait, look at that. Oh, it's not 16, it's like 1/16. Okay, so x is equal to 1/4, sorry. Hey, oh, okay, this is going bad. और x equal to 1/4 कब होता है? when b equal to 1. So second derivative तुम्हारा 0 हो गया, so it's like having no solution at all, because so it can only have 2 if b bigger than 1 and 0 if b is equal to 1 or less than 1. Okay, so C is the answer. Next question. 70 is done. 71. Okay, let A be equal to this matrix, then mod of A, sorry, the determinant of A is equal to, okay, so 1 plus x plus, okay, जो भी है, not good. Symmetric, okay, very interesting. 2xy minus z, and then what is all of this? Seriously, some kind of linear combination of something, I don't know. It's like the identity matrix, but उसमें कुछ गंदी चीजें डाली हुई है. So x square minus z square and then minus x square. Why is that there? Okay, it's not even symmetric. Okay, look at that. It's not going to work. Oof. कुछ तो भी अच्छा करना पड़ेगा. This determinant though. Think. Just think. You can like try to add up stuff, right? I don't think that's going to help though. Yeah, this won't help. अच्छा, कोई और तरह से करना पड़ेगा. Remainder theorem or something. Okay, so this is, लेट्स सी, इसमें एक्स स्क्वायर का क्या क्या है? इसमें एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर. इसमें ऑलरेडी 3 तो आ चुके हैं, मतलब इसमें एक्स पावर 6 आने वाला है. और हाँ, इन चीज़ों में कहीं नहीं आएगा, बिकॉज आ भी सकता है, बिकॉज लाइक फाइन, बट आई डोंट थिंक वो आएगा. सो एक्स पावर 6 तो इसमें एटलीस्ट आने वाला है. सो इसकी डिग्री चेक करो, ये तो गलत है, नॉट करेक्ट. इसकी डिग्री चेक करो, एक्स पावर 6 तो आना चाहिए ना, राइट? पूरे एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं एक्स पावर 6 आना चाहिए. ये है शायद से, ये भी हो सकता है.
this. Okay, so A और C तो disqualify अपन वैसे ही कर डाले, and then B and D. So let's just okay 0 0 को नहीं put कर सकते. It's not gonna make sense. Okay, something else. Square का cube. Wait a second. Wait. Ah, right. Okay. कहाँ पे था मैं? Yeah, just figure this out, right? Okay, let's just put like ये squares आ रहे हैं इसमें. So just think this is bigger than or equal to that. Okay, let's try putting some stuff. Let's just put z equal to 0. Z equal to 0 put किया तो क्या हो जाएगा? यार ऐसा कोई अच्छा तरीका होना चाहिए ना इस टाइप के चीज़ों को सॉल्व करने का. Yeah, there must be some better way than right. कुछ तो होगा जो मैं z the identity matrix plus कुछ भी रैंडम सी चीज डाल दी इसने. ओके 2xy 5 2xz. ओके ओके. इट्स नॉट हेल्पिंग यार. कुछ के कुछ हो रहा है अब तो. ये जो एक्स्ट्रा की चीजें हैं माइनस जेड और ये प्लस वाई इन सबका मैं क्या करूँगा. यानी कुछ तो होगा. आई गेस द बेस्ट वे इज कि तुम डायरेक्टली इसको सॉल्व करो. सो राइट इसका भी दिस थिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हाँ तीनों जो प्रोडक्ट रहेगा जस्ट टू विथ दैट इसका प्रोडक्ट बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग. ओके एंड राइट सो ऐसा जाएगा. व्हाई इज दिस सो कॉम्प्लिकेटेड? isn't there some better way? Must be some better way, right? Even doing the cross stuff it doesn't actually help. ठीक है ना, एक काम को जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करो. लेट्स जस्ट पुट z इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1. so ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट? 1 प्लस व्हाट्स दिस लाइक 1 माइनस 1 तो 0 हो ही जाएगा ना. ये भी हर जगह पे क्या क्या हो रहा है? z तो 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा. ओके एंड दिस थिंग विल नॉट बी 0 so it's just 1. this thing is 1 and this thing is 1 minus 1 which is -1. ओके और ये चीज़ का क्या हो रहा है? z तो हर जगह से हट गया. एक्स वाई इज -1 लाइक ये पे -2 आ गया. ओके यहाँ पे भी ओके z तो गया. y is just -1 as we said. so yeah like 2 times of -1 just -2 over here. और ये चीज़ क्या हो जाएगी? z तो गया just something like -2 because so just -2 over there. फिर ये क्या हो जाएगा? z तो गया just xy just -2 so it's going to be -2 over there. और seriously I mean what is this actually? You could start I mean yeah like why don't we just do continue this thing. so ये तो गया just y equal to 1 so like यहाँ पे 2 आ जाएगा. and ये गया just नेगेटिव नहीं नेगेटिव just pause for a second just 2 over there. ये चीज़ बनेगी. ओके वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये तो नेगेटिव है तो वो तो बाहर निकाल. दिस नेगेटिव डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -2 2 2 1 1 -2 2 and 2 ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा obviously whatever. Just try to do this thing. so 1 times what is 1 minus 4 फिर 2 times -2 -4 फिर plus 2 times -4 -2 right. so उसका negative in fact negative of all of that actually it will be what 3 because yeah plus 4 times 2 plus 4 which is 4 times of 6 so it's 24 25 आंसर आ रहा है. so it's not 0 right. okay wait just do it correctly. 25 आंसर कब आएगा? तो इसमें आ सकता है क्या? नहीं बिकॉज ये तो 1 आएगा. so it must be this thing because 1 plus 1 3 का what oh so it's 27 क्या कर रहा हूँ मैं? 27 so it's just 3 की power 3. yes it's correct. so B is the answer. next question. I know ये बहुत घटिया था but ठीक है. 72 this integration is equal to what? so 1 to e of 1 upon x square root of x natural log of x plus square root of natural log of x upon x dx. oh god okay square root of x इसमें हर जगह पर आ रहा है.
चलो कुछ तो करना पड़ेगा इसमें. That sort of x is not helpful. Square root of natural log of x. How am I going to solve that anyway? Not helpful. Not helpful. Uh, unless of course मैं इसको differentiate करूँ. That would have made sense, right? Okay, just think about it. Like 1 upon square root of x, maybe square root of natural log of x. ये चीज़ है. If you like integrate this thing and differentiate that, what will you get? Sorry, मैं उल्टा लिख रहा हूँ. इसको integrate करो and इसको differentiate करो. So power negative 1 upon 2 just plus 1 is like 1 upon 2 आ जाएगा इसमें just 2 square root of x. Okay, square root of natural log of x minus integral में क्या आने वाला है? So 2 square root of x, but then इसका derivative just 2 square root of natural log of x and then 1 upon x. So ये तो गया just this thing. Awesome, isn't it? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है, right, this thing and that combined with ये वाला, ये तो मर जाएगा basically. Yes. So basically this thing 2 square root of natural log of x, x natural log of x, इसका derivative है ये, right? Looks cool to me. So it's going from what to what? 1 to e. Just 2 फिर sort of e times of 1, just sort of e basically minus 0. Yeah, sort of e, which is c. Next question. 73. From P1, 2, two tangents are drawn to a circle touching it at A 3, 1 and E 0, 0. Equation of its circle may be. एक पॉइंट है उससे दो tangents draw किए touching, okay, to a circle touching it at this and that. हाँ, interesting. Equation of the circle may be. अच्छा, ये जो है इसके contact points है and ये एक random सा point दिया है. Where this happens. I mean, you can always figure out the. Oh yeah, right. Understood. It's gonna be over there, sure, but I guess there's something better than that. So, right. I mean, what are we actually trying to figure out कि ऐसा जब रहेगा, right? So इनका जो angle bisector है इस vector का, right? You just have to do that and then you will know कि ये इस पे कहीं तो भी lie करने वाला है. तो इसका like fine, we can do that, cool. And this should be like these are actually your contact points. So हाँ, yeah, इससे perpendicular चाहिए अपने को, right? Okay, so no big deal. It's doable, I guess. It's getting complicated, isn't it? Think. How would you do this? Equation of the circle. क्या मैं इसको डायरेक्ट ही नहीं कर सकता somehow? Do I really have to figure out this? You know, you can always do this thing: x squared plus y squared minus 2ax minus 2a 2by, okay, is equal to our r squared, something like that, right? Or like this: x minus a का square plus y minus b का square is equal to r square. You could do this, right? Sure, you can do that. Or फिर write down 3 equations. That's just not going to be worth it. Yeah, it's not worth it. Oh, it's passing through 0, 0, so we actually know that it's just of this form: square plus y square minus 2ax minus 2by is equal to 0, right? It's of this form. ठीक है, just put p in there. Let's see what happens. So just x plus, so for y just like 2y minus ax minus a times x naught, which is just 1, so like minus a, and then minus by minus b by naught. इसको प्लस ही रखो यार, बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाएगा. प्लस b by naught, which is just plus 4y shit 4b, that's equal to 0. okay, ये अपना d equal to 0. इसके ऊपर we already know कि 0, 0 इस पे बैठता है, right? Okay, no, we don't know. So ठीक है, 0, 0 से satisfy करता है, so just put that in there. So we'll simplify करो, just a plus 1 times of x plus b plus 2 times of y plus 4b plus a equal to 0, right? Put 0, 0 in there, just 4 plus a should be 0. And then put 3, 1 in there. So क्या हो जाएगा? 3a plus a is just 4a plus यहाँ पे 3 आएगा
और y क्या है 1, right? So just plus 3 plus 2 which is 5, और b के लिए क्या है? Just plus b, okay, like 5b equal to 0. Two equations, right? इसको किया है 16b and then 4a. Subtract, just get like what? 11b minus 5 equal to 0. So b is equal to 5 upon 11. I don't think it's going good. It's just not going good. इसमें अपनी गड़बड़ हुई. इसमें अपनी गड़बड़ हुई. Otherwise ऐसा नहीं हुआ होगा इतना बुरा. ओके, सो इनमें तो अच्छी वैल्यूज आ रही है ए और बी की. देन मेरा क्या गलत हुआ? Actually, like 3,1 over there. So just I need to think. For some reason it's not working. Oh shit, ये कैसे? Ah, seriously. चलो ठीक है. I guess we should stop now because line भी. Fine. So I'll see you in the next video.